Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now I am going to get discuss about the AC generator. So AC generator is an electronic machine which based on the principle of electromagnetic induction. This is an electronic machine which based on the principle of EMI. Okay, it is an electronic machine based on electromagnetic induction. यानी ये जो एसी जनरेटर है ये किस पर बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर. ओके, जहां पर कोई मैग्नेटिक पोल और कॉइल रिलेटिव मोशन में होता था तो कुछ करंट इंड्यूस्ड होती थी और उसकी इंड्यूस्ड करंट की वजह से कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था. तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? ओके, सो दिस AC generator is an electronic machine which based on the principle of electromagnetic induction, and by this modern type of generator means AC generator here produce the 500 megawatt power. Okay, it produces the 500 megawatt power, and using of this power one can light up of 5 millions of the electric bulb with a 100 watt powers. Okay, मतलब इतनी पावर प्रोड्यूस कर सकता है 500 मेगावाट, जिसकी हेल्प से 100 वाट्स के जो बल्ब हैं वो कितने मींस 5 मिलियंस इलेक्ट्रिक बल्ब्स एट वंस एक साथ हम जला सकते हैं. सो दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which based on the principle of electromagnetic induction, and this modern type of generator or AC generator produces the 500 megawatt power, and by using this 500 megawatt power we can light up at a same time 5 millions of an electric bulb with a power of 100 watt each. So what is an AC generator? So let me discuss here. This is a rectangular coil named PQRS which rotates about its own axis, and magnetic field and this axis mutually perpendicular to each other. Simply it attached by the two slip rings. These are the slip rings. Okay, and it produces the AC EMF. Okay, so let here a rectangular coil PQRS whose area is capital A, its area is capital A, rotates about its own axis, which this coil attached through the two rings R1 and R2 slip rings, and whenever it rotates about its own axis then it produces some alternating EMF, AC EMF. Okay, so here the area is A and magnetic field is B. So whenever it rotates about its own axis, then here change in flux, and due to this produces some EMF. So like this, we know that flux is equals to phi equals to B
BA cos theta or omega t. So differentiate with respect to t both sides. Okay, so now d phi by dt is equals to BA d by dt cos omega t, and it is equals to BA minus omega sin omega t. This is equals to d phi upon dt, but we know that E is equals to minus n d phi upon dt. So E is equals to minus n minus BA omega sin omega t. So its value is BA n omega sin omega t. This is the value of EMF whatever we produce on rotating this coil between the two strong poles of N and S. So here this is the flux phi equals to BA cos omega t. Whenever we differentiate with respect to t on both sides, then d phi by dt equals to BA d by dt cos omega t. So differentiation is minus omega sin omega t. So E is equals to minus n d phi by dt. So putting here the value of d phi by dt, so its value of EMF is BA n omega sin omega t. So its value, maximum value will be formed at 90 degree. So when omega t or theta equals to 90, then E will be max, means E max. It is also denoted by E naught. So E is equals to BA n omega, and this is the maximum value, E naught or EM. So by this equation, first, E equals to BA n omega की वैल्यू क्या आई है, मैक्सिमम वैल्यू EM sin ओमेगा टी, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं E naught sin omega t. So this is the equation of EMF, which is the periodic equation, और SHM को फॉलो करने वाली इक्वेशन मिलेगी. So इसका कर्व जो होगा वो भी एज SHM के तरीके से होगा. So let me discuss here the phasor diagram of the AC generator. Phasor diagram. Okay. So here we consider one complete cycle of AC like this. Okay. Zero degree, 90 degree, 180, 270 and 360. In this situation, how will this coil PQRS rotate about its axis? So here these are the magnetic poles N and S. These are the some specific condition, and here in which way the coil will be rotated. So first of all, this is the rectangular coil.
PQRS. Okay, this first condition, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth and last stage. Okay, so let me consider here. First of all, this is the condition of this rectangular coil PQRS. पहले ये इस तरीके से ये फ्रंट पे है, जैसे 90 डिग्री रोटेट करेगी तो PQ नीचे आ जाएगा, RS ऊपर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से देखिएगा, पहले ये PQ डाउनवर्ड है और ये RS ऊपर है। फिर इसके बाद क्या होगा, जैसे ये रोटेट करेगी तो PQ ये आ गया, ओके, फ्रंट पे, और RS पीछे चला गया। नेक्स्ट टाइम में जब ये आएगा तो PQ यहाँ पर आ जाएगा और RS ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये अभी ये फ्रंट पर है और ये अपवर्ड आ जाएगा, RS PQ ऐसे आ जाएगा, और अगेन जब ये आएगा तो PQ फिर यहाँ पर आ जाएगा और RS यहाँ पर आ जाएगा। देखिएगा, जैसी सिचुएशंस में थे वैसे ही फिर कॉइल आफ्टर वन साइकिल ये कॉइल वैसी सिचुएशंस पर आ जाएगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये कॉइल की नेक्स्ट कंडीशन है आफ्टर द 90 डिग्री रोटेशन। 90 डिग्री जैसे चेंज होगी तो ये ऐसे आ जाएगी। ओके, ये PQ है, ये अपर टर्मिनल है इस कॉइल का, साइड है RS, ये इस तरीके से है, जैसे ये आएगा सो ये PQ इस तरीके से आ जाएगा, इसका ये डाउनवर्ड से फ्रंट पे आ जाएगा और ये RS बैक में जाएगा, फिर RS नीचे आ जाएगा, PQ ऊपर आ जाएगा, फिर PQ बैक में आ जाएगा, RS फ्रंट में आएगा, और नेक्स्ट टाइम PQ फ्रंट में आ जाएगा, RS बैक में चला जाएगा। तो इस तरीके से इसका रोटेशन जो है कॉइल का ऐसे हो रहा है, और ये इसका फेजर डायग्राम है। ओके, and now this is the main, the AC generator whatever we prepared in India, that the frequency is 50 Hertz, and the AC generator whatever we prepared in USA, that's frequency is 60 Hertz. Okay.